Yes, Shubha. If you can, so you can watch the video. You can watch the video. अभी तो मैंने डाला नहीं है. वैसे YouTube में लोड है, बट मैंने उसको अभी उसमें नहीं लिंक नहीं किया है ग्रुप में. So I think today I will link, और you can watch that video. और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, you will ask. Okay. Okay. Now today we can start with question number 6. Now I want Yuva, you can read the question number 6, please. Good. Very nice. So the figure is like this. As a, yes, good afternoon. Now see, this is the rough figure for this, and this, suppose this is the altitude from A. इसको उल्टा बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. See, this is a parallelogram ABCD, and this is A, B, C, and D. And from A, we have to draw AN. Now, anyone know that how do we draw the altitude? Anyone? शिवानी? सी, देखो अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर. ये एक जस्ट रफ फिगर है, उसके लिए है ये. सी, वी हैव टू ड्रॉ द ऑल्टीट्यूड. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से करना है सबको. एंड दिस इज एल, एंड दिस इज 2.5. सो एवरीवन draw CD. CD is given here. Okay, nahi. AB is here, and AC is here. Okay, the diagonal, this AC is here. Okay, and AB is equal to 6.5. So this is also 6.5. Yes? Okay. Now everyone draw according to the figure. यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चेंज करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. So see, we can draw CD, and C is here and D is here. Okay? Draw the altitude from, अच्छा, draw the altitude from C and measure it also. Okay, we have to draw the altitude at C and draw also. Now see everyone, draw the line this. Hmm. And how do we draw the altitude without the angle? So just a moment, I'm just thinking about this कि हम इसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं. ओके. अच्छा ठीक है, लेट अस सी. थोड़ा सा चेंज करते हैं. मुझे लगता है कि फर्स्ट वी ड्रॉ AC. AC is given here 3.4. First draw AC. This is 3.4 centimeter. Everyone draw this. First draw AC.
This is 3.4 centimeter. Clear? Drawn? Okay. From A, the altitude is how much? 2.5. Take a radius of 2.5 centimeter and draw an arc. एक आर्क बनाना है. और you all can tell me, थोड़ा मुझे बताना ये चीज कि ये परपेंडिकुलर दिख रहा है या नहीं, because this is very important. Now take a radius of 2.5 centimeter and mark an draw an arc. Drawn? Mhm. If we draw AC, then what is the problem? Hmm. Wait. From C we can draw D 6.5 centimeter. Hmm. देखते हैं. Okay, take a radius of 6.5. Take a radius of 6.5, and from C you have to mark the point D. I think this arc is कटा ही नहीं होगा वो तो आर्क फिर. How do we draw from here, from here, from here? Construct a parallelogram ABCD which ABAC and the altitude from A is 2.5. एक और आइडिया लग रहा है मुझे. Okay, now see AC. First draw AC at A. Draw 90 degree like this. फिर भी नहीं होता. Okay, leave this question first. 6. I will try in my I will try own. Don't waste the time. Okay, just leave the space, some space, left some space, and start the another. Don't waste. I will try my own, and then next, question number 7. Construct a parallelogram. Construct a parallelogram ABCD in which the diagonal AC 3.8 centimeter and diagonal BD 4.6 centimeter and the angle between AC and BD is 60 degree. So for this you have to draw the two diagonal. First इसको सीधा करते हैं. Rough figure is not required in this. हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 पे. Now see, first we have to draw any of the diagonal. Suppose AC 3.8 centimeter. Then draw the perpendicular bisector to locate the center from where the second diagonal passes. Yes? समझ आ रहा है? अब बोलते रहना भाई, बीच में लग रहा है आवाज वो हो रही है मिस. तो first draw a diagonal that is 3.8 centimeter, that is AC,
and then draw a perpendicular bisector to locate the center of the diagonal from where the second diagonal passes. Okay, and now at this center, draw 60-degree angle. Draw 60-degree angle. Then how will you draw the 60-degree angle? Draw this, and see. You can draw the line in both, like this. Clear? And now the second, what is the length of second diagonal? BD is 4.6. 4.6 divided by 2 is equal to 2.3. So take a radius of 2.3 in your compass, put at the center and mark here and mark here, like this. And now this join this. Clear? कोई confusion है तो please पूछो. This is clear, everyone? First you have to draw the diagonal and then locate the center where the second diagonal passes. At the center, draw angle equal to 60 degree by using compass and scale, and then draw a line up and down, and then take a radius of half of the second diagonal. This is BD. So half of 4.6 is 2.3. So take a radius of 2.3 in your compass, put at the center, first up and then down, mark, and then join the four sides. Now the required parallelogram ABCD is constructed now. हो गया सबका, सबने बना लिया? Then read the next question you are. Construct a rectangle whose adjacent side is given here, and everyone know that what is the angle? What is the measure of angle in a rectangle? युवा, कितने डिग्री का एंगल होता है रेक्टेंगल में? So this opposite sides are equal and 90 degree. So there is two, means two adjacent side is there. So first you can first see. I am making this. You can do question number. What is the question number? Question number 8 in homework. Okay, but I am just showing you how you make, how you draw. ABCD. Suppose this is one diagonal 8.5. Now draw perpendicular. Now draw 90-degree angle from here and here also. Okay, and take a radius of 11 centimeter and cut here and join. This is 11 centimeter. This is 8.5. This is 8.5. Oh, sorry. This is 11. ठीक है? समझ आ गया सबको? So next, श्रद्धा क्लास में हो या नहीं हो? She is there in class or? Okay. सक्षम? बस इंटरनेट चला, मतलब ऐसा कभी क्यों महसूस होता है कि इंटरनेट चला के ना तुम लोग क्या करते हो पता ही नहीं चलता है. नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 9. This is the homework again, same like the rectangle. Next, read the next question first. Hmm. 5.8 centimeter.
चलो कर देते हैं इसको. And what is the property of the square about the diagonal? Saksham? बस खत्म हो गई सारी कहानी. तो मेरे को लगता है कि ये सभी खुद ही कर सकते हैं या नहीं कर सकते. युवा. हाँ, it's very simple. First you draw one and then locate the center. At the center draw perpendicular up and down. ओके. इफ यू लोकेट द सेंटर ना तो वो परपेंडिकुलर ही होता है. तो उसमें ऊपर तुम्हें जितना उसको काटना है डायगोनल को हाफ अप एंड हाफ डाउन काट के उसको ज्वाइन कर दो. दिस नाउ रेक्टेंगल बन जाएगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. तो कितना, हाउ मेनी स्टूडेंट नाउ इन क्लास? मंजीत इज देयर और नॉट? तो मैं मंजीत को खोजता हूँ, वो कभी मेरे को बोलता ही नहीं है कुछ. सो रीड द क्वेश्चन मंजीत 11. ठीक है. And you know that ki in rectangle the diagonals are equal. Manjeet, in rectangle the diagonals are equal. Yes. So देखो, साथ में रहा करो, जिससे क्वेश्चन पढ़ा है वो उसको आंसर भी करना है बहुत सारा. So draw one side. This is QR 3.6 centimeter. After that, draw 90 degree on both. Draw 90 degree on the both point Q and R. And now the diagonal is whatever P, and this is R. So take a radius of 6 centimeter, put here at R basically, and cut this opposite. ठीक है. Take a radius of 6 centimeter, put the compass at R, this 6 centimeter, and at from Q cut 6 centimeter, and now join this and draw the diagonal also. Clear? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो. Now the question number 11 is done. Now 12th. Manjeet, read the 12th question. Same like the square. Same like the square. चलो मंजीत बताओ क्या करेंगे. अभी हमने जो स्क्वायर बनाया था सेम वैसे ही करेंगे. नाउ टेल मी हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस. साइड नहीं है, ये डायगोनल है. देयर इज टू डायगोनल. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 ना. कंस्ट्रक्ट अ rhombus and there is two diagonal. So first we draw the diagonal. Okay, 6 सेंटीमीटर का एक डायगोनल बना लिया. फिर yes, we have to draw the perpendicular bisector. AC वैसी तो अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, but now this is the perpendicular bisector. And what is the length of the other diagonal? So divide it 4, 4 up and 4 down. 4 up and 4 down, and now join this. कोई confusion किसी को?
and please do it. And the classwork must be finished in class only, okay? पहले साथ साथ बनाया करो. So now the 12 question is 12 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं. And what is the time now? It's है अभी time. Hmm, I don't know. I don't understand what happened with the question number 6. Okay, I will check कि क्या है क्यों मेरे दिमाग से बाहर हो रहा है. Okay, leave that. Now this is the last question. Okay, tomorrow we will solve 13, 14, 15, 16 and 6. So if there is 5 tomorrow, हाँ ठीक है, कल आधे घंटे की क्लास है, and in half an hour we will solve these 5 questions, and I will check about the question number 6. Okay. So how much time is left? और ये होमवर्क इस बार सब बड़ा कम, होमवर्क सिर्फ 5 स्टूडेंट ने भेजा है, क्या बात है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? किसने होमवर्क सबमिट नहीं किया है? युवा यूस आई सी शिवानी शिवानी ने भेजा, मैं देख रहा हूँ, मैं अभी नाम बोल देता हूँ, मैंने तो चेक कर लिया है. जस्ट अ मोमेंट, आई वांट टू टेल जस्ट अ मोमेंट. क्लास 8, यस, Shaksham, Shivani, Yuva, Rishabh and Shraddha. What is the problem with you, Manjeet? तो कि क्या मेरे पास मतलब मेरे घर आके देना था क्या? तो फिर ये सब बहाने बनाना बंद कर दो. यू आर जस्ट मेकिंग अ मतलब एक्सक्यूज. अरे घर में हो, जो तुमने किया है, जो थ्रू आउट द वीक पढ़ा है, उसका फोटो खींच के भेजना है बस. मुझे तुम स्कूल में आके दे रहे हो क्या ये तुम्हारा होमवर्क कॉपी और ये सब? देन डोंट, ये मतलब ये सब चीज़ें थोड़ा प्लीज डोंट इग्नोर दिस. इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस करो और अपना होमवर्क सबमिट करो on time, because this homework marks is important for you. On the behalf of this homework marks and PTs, uh, I think there will be a final result. Okay, Manjeet, take care about this, and next time don't forget to send your homework. Okay, bye bye everyone, and take care. Bye.